लेकिन जो भी बना अच्छा बना। मम्मी भी तेज हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत कंफर्ट फूड है। यहाँ पे खिचड़ी है, दही है, टमाटर धनिया की चटनी है, पकोड़ा है, ये आलू टमाटर और परवल का कलौंजी है, चोखा है, सैलेड और लेमन है। और ये मूंग दाल की खिचड़ी है, एकदम प्लेन है, सिर्फ हल्दी नमक हींग डाला है और कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है। और आज मैंने मेकअप नहीं किया है क्योंकि मेरे दो आप लोग के कमेंट भी ऐसे होते हैं ना, मुझे हंसी आती है कभी कभी। किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आप मेकअप पहले नहीं करते थे, आप क्यों करते हो। तो मतलब मोबाइल के सामने मैं ब्यूटी प्लस ऑन नहीं करना चाहती। मैं सीरियसली बता दूँ, ब्यूटी प्लस ऑन करने से क्या होता है, स्किन तो साफ़ हो जाती है, लेकिन जो कलर, जो खाने का कलर होता है ना, वो फेड हो जाता है उसका, वो अच्छा नहीं दिखता है और वो धुंधला धुंधला टाइप दिखता है। तो मुझे वैसा नहीं चाहिए, इसीलिए मैं मेकअप करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सच बात बोलूँ, मुझे मेकअप बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे एक लिपस्टिक बहुत पसंद है, इसीलिए वो मैं लगाती हूँ। और देखिए, कितना भी मेरा ब्रांडेड लिपस्टिक लगा लो, आप खाना खाओगे वो निकल ही जाता है। मेरे पास इतने महंगे महंगे लिपस्टिक्स हैं, मैं जब भी लगाती हूँ, खाना खाती हूँ, ऑयल्स के टच में आएगा वो लिपस्टिक निकल जाती है लिप्स से। तो आप लोग ये मत बोला करो कि मैं लिपस्टिक भी खा जाती हूँ, ठीक है। तो आई होप आपका कमेंट का। और आज मैंने मेकअप नहीं किया है, बंदरिया लग रही होंगी, आई नो, मुझे पता है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और बहुत लोग कमेंट करें दीदी ब्लॉग नहीं आ रहा है, तो ब्लॉग आएगा, कल से अपलोड करूँगी, वीडियो शूट करके रखा है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन हिट कर देना, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी चैनल के नेम, इंस्टाग्राम में भी पेज की लिंक है, तो वहाँ से फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरे चैनल के नेम भी मैंने मेंशन करके रखे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और कैमरे के सामने मेरी आँखें कुछ ज़्यादा ब्लिंक होती है क्योंकि लाइट है ना, इस वजह से। आज मैं पकोड़े बना रही थी, मिक्स वेज, गड़बड़ हो गई सब, लेकिन जो भी बना अच्छा बना है। एक्चुअली क्या हुआ, पकोड़े मैंने डाल के गैस को स्लो कर दिया गलती से, पूरा खुल गया, नमक भी तेज हो गया। खाने में बहुत टेस्टी है। ये गोभी गाजर इसमें है। कलौंजी है।
मैंने कल एक मिर्ची लाई है हरी, छोटी छोटी, मुझे छोटा रहेगा, तीखा नहीं रहेगा। चोखे में इतना तीखा हो गया, सिर्फ 2 ही मिर्ची डाली है मैंने। इसकी रेसिपी अपलोड हो गई है, प्लीज़ चेक कर लेना। नींबू और चटनी रह गया, इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, बाद में खा लूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, बाय।